Let's start skeletal system, movement and locomotion. Okay. So here in this chapter, what all things you have to study is what is the function of human skeleton, its structure also, axial and appendicular structure. Axial means the upper portion, matlab the main axis. Main axis is what? When you are sitting, like when you're sitting posture mein aap baithe ho, like in some asana, like normal padmasana or something, and then from your head to your end of the backbone. Okay, so that particular central part, okay, is called axial part. And appendicular means appendix, like all the matlab your appendages, like hands, legs. Okay, so all those things. So axial and appendicular skeleton. Then types of joints with reference to their location. Okay, different types of joints. So this is the syllabus of this chapter. So why do we have skeleton? And if we don't have skeleton, what will happen? Anushruta, can you tell? If we don't have skeleton, if we don't have bones, what will happen? Yes, Anushruta? Oh, she's not here. Okay, Adrita, can you tell? Adrita? I'm not able to hear your voice. Hello, Adrita. Is there anyone else who can hear my voice? Yes, ma'am. Yes, I can. So yes, Aditya, if you can hear, you can you answer my question. Adrika, can you hear? Yes, ma'am. Okay, Adrika, can you tell And what will skeleton happen? is like importance of skeleton. Yeah, like I'm asking if we don't have skeleton, what will happen? What do you think can happen to Won't us? be able to walk or do our works. Like we won't be able to move our body. Okay, Miss, that we is will not right. be rigid. Yes. Can you tell me anything, yeah, any organism which like don't have this skeleton? Snakes. Miss, Snake. mollusks. Very Miss, good. mollusks. स्वप्न. Mollusk. Mollusk का जो kingdom है, okay, mollusk का जो फाइलम है, वो it doesn't contain any kind of नाइडेरिया. तो जितने लोअर किंगडम्स हैं, लोअर मतलब ग्रुप्स हैं एनिमल किंगडम के, राइट? सो उनमें क्या होती है, उसमें बोन्स या स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, राइट? एंड एज वी कम स्पेशली आपके वर्टिब्रेट्स के पास, ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट्स दे यूजुअली डू नॉट हैव skeletal system, proper skeletal system. When we enter into vertebrates, we find proper skeletal system, which which you can find in all different kind of mammals, and all the groups of vertebrates. Okay. So what is the function of the human skeleton? You can see different functions are shown here. First is support and shape, राइट? इसीलिए मोलस्क का कोई शेप नहीं होता. इट्स लाइक अ सैक, ठीक है, जैसे कोई चीज बहुत सारा भरी हो, पानी भरा हो किसी दूध के पैकेट में, राइट? तो उसको आपको वो कैसा लगेगा आपको?
It is just उसका जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल या जो भी है उसकी वजह से वो वहां पे बस बंधा हुआ है. It's like packed there, but it will not have a shape. It will be like, it won't have definite shape. So it gives us support as well as shape. See, imagine if you did not have small pieces of bones, what will happen, right? Maybe we won't be able to stand, we won't be able to do anything. Okay, it will be like all these materials, blood and muscles and everything without bone is packed in our skin. Okay, something like that. So someone can read this. What is it? Who wants to read? Ashmita? An example of shape and support, just hold your ear, try to fold it, and then leave it free. It resumes its shape. Now feel its interior. It is tough but flexible. This is due to the cartilage skeleton inside it, which is giving it support as well as the shape. Okay, so bones are not only the bones which we find in our hands and legs, like skeleton. Okay, so here when we talk about cartilage, this is also a kind of skeletal system, right? Which gives us, shape as well as support, right? So this is first function. Second is protection. This is very important, right? More, that's why if you see हमारा जो rib cage होता है, like back say, it is a backbone from the back side, and from the front side it's the rib cage, and that protects what? That protects most sensitive organs of our body, like heart, lungs, uh, everything, like all the gallbladder and kidneys. थोड़ा वो नीचे आता है, but main जो आपका होता है heart और lungs, which are very very delicate. Okay, so they get protected by the rib cage. Similarly, the brain, which is the most important and most kind of delicate part of the body. Okay, जिसको specially protection चाहिए, इसलिए हमारी body का सबसे strong bones, skull जो होता है, it's a very very strong protection, right? हमको इसीलिए चोट लगती है या किसी को भी यूजली इफ लाइक स्मॉल एक्सीडेंट्स और नॉर्मली आप गिर जाते हो साइकिल से या कुछ भी, राइट? तो क्या होता है हमारी हड्डी टूट जाती है एट द मैक्स, बट ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्रेन डिसफंक्शन करने लगे या फिर आपका हार्ट डिसफंक्शन करने लगे या फिर लंग्स स्टॉप्स वर्किंग, राइट? व्हाई सो? बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, राइट? अदरवाइज ये नहीं होता तो it could be really dangerous for our rest of the the main organs. Okay, similarly backbone, हाँ backbone, देखो backbone क्या protect करता है? Spinal cord, which is spinal cord is within the backbone and is very important because spinal cord से क्या होता है? आपका जो message होता है, right? Information goes from brain to all the different parts of the body through spinal cord, right? And the spinal cord is also protected by the backbone. Okay, ऊपर ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड? स्कल. देन वो इंफॉर्मेशन जब नीचे जा रही है तब भी स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, वहां से आपको बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, राइट? फॉर द होल बॉडी. So that is also protected. Lungs is protected, heart is protected through the ribs. So you can see, right? And then it also helps us in movement, right? क्योंकि बोन्स अगर हमारी बॉडी में सिंगल बोन होता है या सिर्फ, जैसे कि अगर पैर में मैं बोलूं एक ही बोन होता, ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि कितने बोन्स हैं, पर अगर हमारे पैर में या हाथ में एक ही हड्डी होती तो क्या होता? हम हाथ मोड़ नहीं पाते, राइट? वी कुड नॉट डू द थिंग्स. हम जैसे जो भी डांस करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, गेम्स खेलते हैं, so we can fold our hands, we can eat properly by folding the hands. Why so? Because we have number of bones and they are joined by they are together, fixed together through some joints, right? So these joints also make a very important part of our skeletal system. Okay, and the movement of the body is possible
through these joints, and they're very very important. इसलिए आपके बुक में थर्ड टॉपिक आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है सुनने में कि कौन सी जगह पे कौन से टाइप ऑफ जॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है कि कैसा जॉइंट होना चाहिए, वो तो सिर्फ जोड़ना ही है, बट फर्क पड़ता है। इफ यू सी कि आपकी जो कलाई है, लाइक रिस्ट, लाइक वो रिस्ट किस तरह से मूव कर रही है, इज इट वर्किंग सेम एज योर एल्बो? So you'll find कि no, because the elbow is just moving one side. It is not going, other side. But wrist is moving in almost 360 degrees angle, right? अपने एक particular axis पे वो पूरा घूम जा रहा है, right? अगर किसी का हाथ, like यहाँ से, from the elbow portion अगर ऐसे घूमने लगे तो you'll feel कि अरे ये तो भूत आ गया इसके अंदर, right? So every joint is very different. So those also will see. Those are also part of this skeletal system. Fourth point is leverage. What is leverage? Some bones and joints, they form what? Levers that increase the speed and distance of movement, right? Like they are joined with muscles, okay? They're joined with muscles and they help in fast working. ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया हो यहाँ पे कि लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स बाय द बाइसेप मसल swings the hand swiftly through an arc of more than a foot, right? So in combination with muscles it act as leverage. Okay, then blood cells, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, राइट? कि बोन मैरो कहाँ होता है. तो बोन मैरो इज व्हाट? इट्स काइंड ऑफ portion of blood, or a portion of cells, basically a kind of cells, okay, which forms, they are totipotent cells, like they can form different types of cells, and which has the capability of dividing, and further they acquire a particular function. So these cells, they produce RBCs, right? RBCs, they do not have nucleus at maturity, so they do not they cannot reproduce by themselves, okay? So they are formed in these bone marrows, right? So formation of blood cells, certain type of blood cells including red and white blood cells are formed in the tissue of the central hollow space. जैसे बोन्स का जो हॉलो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम सेंट्रल हॉलो स्पेस या मैरो बोलते हैं. तो बोन मैरो का मतलब क्या होता है? बोन, अगर बोन को बाहर देखोगे, अगर कभी आपने ओरिजिनल बोन देखी होगी किसी लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में, सो यू विल सी व्हाट, यूजुअली सूखने के बाद बोन का जो बीच का पोर्शन होता है, दैट इज हॉलो, राइट? सो जब वो बॉडी में होती है तो उस बोन के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैरो, ठीक है, बोन मैरो. सो बोन मैरो के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स पार्ट की, कहीं कहीं, मतलब नॉट ऑल द बोन्स बट few position of the bones are there where you will find the totipotent cells, and red blood cells, white blood cells, they get produced from these places. So it helps in formation of blood cells. Then last is, they act as storehouse of calcium and phosphorus. Okay, very very important, right? Storehouse in the sense the body में calcium phosphorus की कमी होती है because it is required by some processes, right? So क्या होता है आपकी, मतलब kind of जो ये bones होती हैं, they act as the storage material they provide it. And not only that, यहाँ से आपको ये भी लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि कैल्शियम और फास्फोरस अगर आपकी बॉडी में कम होगा, मतलब इनटेक, ओके, इन योर फूड, देन व्हाट विल हैपन? देन आपकी जो बोन्स होंगी वो कमजोर हो जाएंगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमजोर होना? जैसे बोन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या हाँ, डिके हो जाती है. बोन, especially bone density will decrease, your weight can be reduced, okay, because bone का कुछ weight होता है, so that can decrease.
उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर सकती है. It can become more breakable. Okay, so such problems can occur. So now what are the constituents of skeleton? So basically इसमें क्या होते हैं? Bones, cartilage and ligaments. Bones, cartilage and ligaments. So if you see bones, they are the hard framework. They are the hard framework. Cartilages क्या होते हैं? They are the connecting structures. ठीक है, supporting and connecting structures. ठीक है, here you can. So जैसे आप कहाँ कार्टिलेज आपको देखने को मिलता है? टिप ऑफ द नोज, राइट? आपके ईयर्स जो होते हैं उसमें कार्टिलेज होता है. ठीक है, कार्टिलेज मतलब वो फ्लेक्सिबल है और यूजुअली दो बोन्स के बीच या बोन मसल्स के बीच यू नो कार्टिलेज का होना जरूरी है, क्योंकि बोन को बोन से आप डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, बोथ आर हार्ड, right? So cartilage is present in those areas. Ligaments. Ligaments क्या होते हैं? Ligaments usually bones को बांधते हैं. They join, they bind the bones together. Okay? Cartilages आप देखोगे ज्यादातर कहाँ? Bone और muscle के connection में usually cartilages होते हैं. ठीक है? Now let's see. We'll see each and every part in details. So now bones. Okay, bones are what? One person can read the paragraph. Who wants to read? Ayush? Yes, miss. Can you read the paragraph given in under bone? Okay, miss. Bone is the chief component of our skeleton. It consists of organic and inorganic material. The inorganic part constitutes nearly 2/3 of the entire bone substance and includes mainly the compounds of calcium and phosphorus. If a bone is placed in weak hydrochloric acid, the mineral part is removed from it and the remaining organic framework is left behind. Such a bone is called decalcified bone, and it is soft and flexible, which can even be tied into a knot. On the other hand, if a bone is strongly heated, then its organic matter is destroyed and only the mineral part will remain. Such a bone turns brittle and quickly breaks. With age, as in old people, the organic part of the bone is reduced and the bones become more fragile, taking much time in rejoining after a fracture. Okay. So here you saw two conditions, right? पहले आपको पता है कि बोन में कैल्शियम फास्फोरस है, ठीक है, और उसके अलावा भी कंटेंट्स है, right? So basically it contains two parts, right? One is organic part and another is inorganic part, right? So the inorganic part, it consists of what? 2/3 of the entire bone substance, the inorganic part. Okay, and basically calcium phosphorus. So बोन को दो कंडीशन होती है. एक होता है कि अगर आप उसको एसिड में रख दो, वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी ऐसा मतलब ना एसिडिक चीजें आप बहुत ज्यादा लोगे तो क्या होता है, एसिड में मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके जो मिनरल पार्ट होगा इट गेट्स डिसॉल्व एंड सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो होगा वो बचेगा. और इसमें बताया कि 2/3 पार्ट इज इनऑर्गेनिक, द मिनरल पार्ट. सो 2/3 पार्ट अगर बोन का डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत मतलब वो रहेगा ही नहीं, मतलब यू वोंट बी एबल टू स्टैंड प्रॉपरली. your bones will become soft and flexible like rope. Okay, it will be decalcified. ठीक है, and it will be very very difficult condition. ऑन अदर हैंड क्या होगा, अगर आप बोन को स्ट्रांगली हीट करते हो, ठीक है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिस्ट्रॉय ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. ऑर्गेनिक मैटर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, सो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो जाता है और सिर्फ मिनरल पार्ट रहता है एज ऐश, राइट? और ऐसी बोन्स जो होंगी
they will become very very brittle, मतलब जल्दी से टूट जाएगी, ठीक है. So usually जब aging होती है, aging is the process of becoming old. और मतलब जब cells और सारी चीजें जो होती हैं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, और in a proper understanding, number of cell produced, okay, the rate of number of cell producing becomes lesser than the number of rate of cells dying in the body. Okay, so that is kind of aging process. ठीक है. यूजुअली जब हम टीन एज के होते हैं, जो आप लोगों की एज, इसमें क्या होते हैं, सेल्स तो हमेशा मरती भी है और बनती भी है, न्यू फॉर्म भी होती है, करेक्ट. लेकिन जो सेल्स जो नए बच्चे होते हैं, जो टीन एज होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं, उनमें क्या होती है, rate of production of cell is much higher than rate of death cell dying. But older ages में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है. और यूजुअली उनको उनका ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है, मतलब बोन्स का, वो रिड्यूस होने लगता है, ठीक है. और उनकी बोन्स बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है. यूजुअली जैसे कि अगर उनको फ्रैक्चर हो जाए और उनका बोन को हील करना हो, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. लेकिन बचपन में आप सब लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि लाइक किसी का कोई बोन ब्रेक हो गया, जैसे बचपन में मैं छोटी थी तो मैं एक झूले पे से गिर गई थी, एंड देन आई ब्रोक माय राइट आर्म, ओके, एंड देन इट वाज नॉर्मल, एंड देन आई गॉट रिकवर्ड इन जस्ट a month or 2 months, like that. Okay, so when you are in growing phase, bones का rejoin होना easy हो जाता है. बट जब लेट एज होती है, काफी लेट एज होती है, ओल्ड एज में बोन ब्रेक होने से वो रीजॉइन नहीं हो पाती, फिर आपको उनको आर्टिफिशियल रॉड्स और ये सब लगाना पड़ता है. ओके, सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप. अच्छा, बिफोर दिस, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? एनीवन? No, ma'am. No, miss. Okay, so when we are classifying the bones on the basis of shape, we usually normally tell them long bones, short bones, and irregular bones. Okay, so long bones is one type, short bones, or we sometimes short की जगह flat bones भी बोलते हैं, and third is irregular bones. Okay, so the structure of a typical long bone is given here in your book. Okay, so here you can see this structure, right? So ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, इसको आप इंटरनेट पे भी और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है. So इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यूजुअली ये हाईली कैल्सिफाइड होती है, मतलब कैल्शियम ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि काफी हार्ड होती है. जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो यूजुअली हार्ड होती हैं, दे एक्ट एज रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, जैसे कि आपका जो पैर का बोन्स होता है या हाथ का, ठीक है, दे आर लॉन्ग बोन्स. जो आपके पैर में बोन होती है, थाई से लेकर के नी तक, that bone is very very strong bone. It is a kind of इसको हम अलग अलग नाम बोलते हैं, like femur, tibia, ठीक है. So हम नाम, I think नाम is given, yeah, all the names are also given here, right? So you can see here, right, this bone is femur. Okay, this पैर में क्या होता है, हाथ में भी, सबसे यहाँ पे देखो, ये बोन जो होती है इसको बोलते हैं, ये सिंगल बोन होती है, ह्यूमरस. यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ तक. फिर यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होती हैं. सिमिलरली पैर में भी ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं फीमर, और ये जो होते हैं दोनों बोन्स, टिबिया फिबुला, दीज आर 2 बोन्स डाउन, ठीक है. स्पेशली दिस पर्टिकुलर बोन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इस बोन में जब चोट हो या इस बोन का ब्रेकेज होता है तो आपको टाइम लगता है जोड़ने में. एंड these are long bones, right? These are long bones. So long bones में क्या क्या चीजें होती हैं? See, there's it's highly calcified, hard and rigid connective tissue. It is very strong and can withstand severe stresses. Okay, it consists of bone cells arranged in the form of
concentric rings. ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको एक लाइन में लिखा है, इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्लास 11th में। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अलग अलग नेम्स आते हैं, कैसा क्या होता है एक बोन के अंदर, कैसी सेल्स अरेंज होती हैं, क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सो सेल्स, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, याद करोगे तो अच्छा है। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स आर बोन सेल। जैसे मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स वर नोन एज ल्यूकोसाइट्स and platelets were known as thrombocytes. Similarly, bone cells are known as osteocytes. ठीक है, इस नाम से आपको याद रहेगा, जैसे बोन डेंसिटी कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज को। तो ऑस्टियो टर्म से you can remember it is something connected to the bone cells. Okay, so yeah, so osteocytes consist of bone cells which are arranged in the concentric rings and they are embedded in a ground matrix. मतलब जो बोन सेल्स होती हैं वो उनको एक मैट्रिक्स चाहिए होता है जिसमें वो एम्बेडेड होते हैं। दैट मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है, एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, और उसमें वो फिक्स्ड हो जाते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी there's a hyaline cartilage, the spongy bone with the red marrow, then fatty yellow marrow, बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, and then here also you'll find hyaline cartilage, the outer portion, ending portions में, and then there is, see here, end of the bone. Okay, this is known as ligament. मतलब बोन नहीं है वो, लिगामेंट है बोन के ऊपर, जो कि कनेक्ट करने के लिए, दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो एक्सटर्नल सरफेस जो होता है बोन का, वो यूजुअली किससे कवर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम, पेरियोस्थियम। ओके, पेरियोस्थियम जो होता है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बोन, ओके, which consists of what, outer fibrous and inner cellular layers and richly supplied with blood vessels. Okay, that is the structure of the bone cells, kind of, मतलब कैसे होते हैं वो। So a long bone has what all things, हमने देखा, ठीक है, उसके बीच की हॉलो कैविटी को हम क्या बोला, बोन मैरो बोला हमने, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप याद करते जाओ अभी से। If you already remember, then revise it, and if you are hearing for the first time, try to remember. Sorry. So ये जो बोन मारो होती है, ये दो तरह की होती है, यहाँ पे हमने देखा, राइट। एक हमने कुछ बोला कैसा, स्पॉन्जी बोन विथ रेड मैरो, यहाँ रेड मैरो है, यहाँ पे एक वाइट, ये येलो मैरो है, राइट। क्या फर्क क्या है, सो दो तरह के मैरो है, राइट, येलो मैरो है, रेड मैरो। सो येलो मैरो का मतलब क्या होता है, it is adipose tissue, made up of adipose tissue, okay, जिसकी वजह से वो white लगता है, ठीक है, and blood vessels which give rise to the white blood cells, oh sorry, adipose tissue की वजह से भी लगता है, और it gives rise to white blood cells, not the red blood cells. and जो red marrow होता है, ठीक है, ये क्या करता है, red blood cells को generate करता है, produce करता है। so there are two types of marrows. Okay, see here, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, so you can read this also later. Okay, so this was all about the basic, very basic things of the skeletal system. Is there any doubt, anything which you're not able to understand? Anyone? Okay, I think there's no doubt. No doubt to anyone? No, ma'am, no doubt. No, ma'am. Okay, Miss, I have a doubt in the check progress. bolo. Miss, in the yes, Miss, there the fourth question. The central bone part Yes, Miss. of the long bone
is known as what? Bone marrow. Yes, but the bone marrow is the substance which is present in the central hollow part. No, it's not the substance, उसको एक तरह से बोलते हैं, but usually क्या होता है, ये जो hollow part है बोन के अंदर, हम उसको bone marrow बोलते हैं. Okay, miss. ओके जैसे यहाँ पे फैटी येलो मैरो या रेड मैरो जो बोला है, इट्स नॉट द सब्सटेंस. वहां की जो सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली. सो बट दैट पार्ट ऑफ द बोन, ओके, दैट हॉलो पार्ट को हम बोन मैरो कहते हैं. इट्स नॉट अ सेपरेट structure. It is the same structure Okay. of the bone which is producing those things. Bone cells are producing that cell. Okay. Yes, miss. Okay. Any other doubt? Okay. So let's, if there's nothing else, then let's move on. Should we stop it here, or are you saturated, or should we continue? Anyone? आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो हम skeletal system next class में शुरू करेंगे. Yes? Yes, you can continue. Continue? Okay. Okay, so let's continue because no one is telling ki no ma'am, will do it in next class. So let's see what all things are there in this human skeletal system. Okay, so मैंने बताया था आपको, एक होता है axial skeleton, एक होता है appendicular skeleton. ठीक है, so the axial skeleton includes what? Basic central framework. ठीक है, जो मैंने आपको mention किया, right? The skull, the main backbone, ribs. ठीक है, ये जो चीजें होंगी ये axial skeleton में आता है. And appendicular skeleton क्या होता है? It forms the limbs and girdles. Girdles क्या है आपके, जैसे हाथ की बोन्स जब एक्सेस के बोन्स के साथ जुड़ रही है आपके, मतलब शोल्डर्स के पास, तो वो शोल्डर में गर्डल है. जब आपके लिम्स, पैरों की जो बोन्स है, लाइक in near the thigh, when it is getting connected to the central part of the bones, central bones. Okay, so there also there is a girdle, जैसे हम उसको बोलते हैं pelvic girdle. Then there is pectoral girdle. Okay, here you can see in the structure, if you see ना, यहाँ पे girdles नहीं पता है, but ये जो होता है इसको हम girdle बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये pelvic girdle है, ये pectoral girdle है. ठीक है, so anyways यहाँ पे mention नहीं किया है, तो you don't have to go more. Okay, so Miss, it is defined later. Miss, the girdles, different types of girdles. okay, so there are girdles. Okay, that those are usually kind of portions in the bones which helps in connection. Okay, so let's see axial skeleton. Axial skeleton में सबसे पहले आता है skull. Okay, दूसरा आता है vertebral column. ठीक है, and इसके बाद क्या आता है आपका? Third is ribs. Okay, and fourth is sternum. ठीक है, so these are 4 parts. क्या क्या है? Skull, vertebral column, ribs and sternum. Okay, these are 4 components of axial skeleton. So first part is skull. So skeleton of the head, that is skull. Okay, so इसके भी 2 parts होते हैं. एक होता है सबसे ऊपर का top part of the cranium. ठीक है, no sorry, it's not 2 parts, मतलब it is, but the upper part of the cranium, उसका जो part होता है, मतलब सबसे ऊपर जो आपको दिखता है, उसमें 8 bones होती हैं. ठीक है, which are joined to each other, and that joining is fixed joint.
that is not movable joints. Okay, so 8 bones are there in the upper cranium which are joined with each other permanently. Okay, उसके बाद क्या होता है, ये क्रेनियम का कौन सा पार्ट हुआ, ये मतलब ये स्कल का कौन सा पार्ट हुआ जो आपको जिसपे बेसिकली बाल दिखता है, इन शॉर्ट आपके हेयर्स जितने पोर्शन में होते हैं वो वाला जो पार्ट है उसको हमने बोल दिया क्रेनियम, अपर टॉप पार्ट। ठीक है, इसके अलावा बोन्स होती है फेस पे। So the other part of the skull forms the face, which contains a total of 14 bones. ये number of bones are important. ठीक है, cranium में कितनी bones है? 8. Facial bones कितनी है? 14. Okay, so the upper facial bones में बहुत सारी चीजें आती हैं, upper jaw, lower jaw. ठीक है, then आपका nose का अंदर वाला portion, eye sockets. ठीक है, so all those things are there and there are many bones to form those areas. So that is, those are 14 in numbers. Okay, the back part of the cranium contains a large hole. ठीक है, मतलब जब आपका क्रेनियम नीचे जब जाता है, नीचे की तरफ इन द सेंस मतलब गर्दन के पास, ठीक है, मतलब सेंट्रल के साइड में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बहुत बड़ा सा काइंड ऑफ होल होता है, उसको छेद बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जो होता है ये एक लार्ज होल होता है नियर द लोअर साइड ऑफ द क्रेनियम, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन से होकर के सॉरी मतलब जो आपका नर्व्स मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट गोज थ्रू दिस फोरामेन मैग्नम टुवर्ड्स द बैकबोन, जो आपका वर्टिब्रेट वाला जो बैकबोन है पीछे साइड, उसके अंदर, उसके जो मैरो के अंदर से होकर के जाता है। ठीक है, सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इट गोज थ्रू दिस होल इन द क्रेनियम। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई होल नहीं होता, क्रेनियम में कहीं कोई होल नहीं होता। ठीक है, इट इज फिक्स्ड जॉइंट एंड देयर इज वन होल डाउन साइड जिसको हमने क्या कहा, फोरामेन मैग्नम, if it is given here. ये तो वर्टिब्रा है। Okay, yeah, wait, I'll show you. That will be better to understand. Especially ये चैप्टर को अगर आप जितना देख के समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है, नहीं तो समझ नहीं आता है। Just a second. Can you see something on the screen? Yes, ma'am. ओके, ये देखो Yes, जैसे ये आपका सर है, मतलब मैं नीचे से आप देख रहे हो, देखो ये दांत का पोर्शन है, राइट, ये नोस्ट्रल्स है। ठीक है, सो इस पोर्शन में ये जो होल है जहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ओके, तो स्कल का जो एक्चुअल पिक्चर होता है वो इस तरह से दिखता है। सबको दिखा? एवरीवन कैन सी दैट दिस पोर्शन? Yes, yes. Okay, so this is foramen magnum. Then coming to the vertebral column. ठीक है, vertebral column जो होता है, here you can see, right, this is the vertebral column. ठीक है, so vertebral column is popularly called as the backbone, right? Backbone में क्या क्या चीजें होती हैं? Total of 33 ring-like bones called vertebrae. Okay, 33 ring-like bones जो कि फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ठीक, 5 ग्रुप्स में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ऊपर मतलब गर्दन के पास से हम चल रहे हैं, तो क्या आ गया, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ओके, कितने हुए काउंट करो जरा।
Tell me. This is 7. This is 12. This is 5. And sacrum and coccyx. Tell me, how many are there? Ayush? Anyone? Miss, if we consider the sacrum and the coccyx as one bone, then it is coming 26. 26. If we And how many it consider, is written? 33. Miss, if we consider the sacrum and the coccyx as a single bone. Okay. 7 plus 12, that is 19, plus 5. कितना हुआ? 23. नहीं, 19 plus 5, It was 24. 24. 24 24. plus 125 and then 126. बट अभी कितना बोला इन्होंने? 33 बोला. तो 33 कैसे हुआ? क्योंकि सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है, they are fused bones. Sacrum is 5 bones fused together and coccyx is 4 bones fused together. Okay, so this 5 plus 4 is 9, and this makes the vertebral column of 33 bones. Okay, is this clear? Is this clear, everyone? Why very Yes, few ma'am. students are there today in the class? Yes, miss, Yes, clear. yes, clear. I'm seeing only 9 students. One is me only. Why so less number of students? I don't know. Others. KV's exams are going on. Okay, Kendra Vidyalaya exam is going. That's why I'm not finding any of the KV students here. Okay. So this is vertebral column, right? What all things are there? Cervical, thorax, lumbar, sacrum, and coccyx. Okay. So you remember it like this. This chapter is also more to remember, like the nutrition chapter. Okay. So cervical, thoracic, lumbar, sacrum, and coccyx. So vertebral column is curved. Why it is curved? To maintain balance of the body. Okay, किस particular posture में कैसे balance करना है body को? That is done by the vertebral column. इसलिए यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां हैं, वो single भी बना सकता था, right? Lord would have designed it single, but अगर single बनाते तो क्या होता? We could not move, right? बहुत मुश्किल होता हमको मूव करने में. बट हल्के पॉस्चर से भी हम बहुत डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, एंड दैट चेंज इन द पॉस्चर कैन बी डन ओनली बिकॉज ऑफ द बोन्स. मेनी बोन्स आर देयर इन द vertebral column. Okay, small bones are there. Okay, they help in forming different postures. Okay. And this kind of curve which is present now, this actually helps in it helps in absorbing the shock while walking या फिर running के time पे एक protection होता है इस particular posture की वजह से. ठीक है, ये जो posture दिया गया है. So if you see the vertebrates, आपको ये higher class में पढ़ना होगा, ये आपको आज यहाँ पढ़ाया जा रहा है 9th में. 11th में again you will be repeated the same thing. Okay, little bit more in details, but almost everything is given here. So आपका जो vertebra होता है, ठीक है? So vertebra में each vertebra is somewhat ring like. Okay, and उसका जो lower part होता है, that is solid, जिसको सेंट्रम बोलते हैं. ठीक है, और दो ऑपोजिट एंड्स जो होते हैं सेंट्रम के, वो फ्लैट होते हैं.
ठीक है. So here you can see ये thoracic vertebra का वो है, structure है. Okay, here also you can see ये thoracic vertebra है, ये first vertebra, इसको atlas बोलते हैं. ठीक है, first vertebra को atlas बोलते हैं. ठीक है, तो इनमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं. यू कैन सी राइट, न्यूरल आर्क, न्यूरल स्पाइन, राइट. इनका फंक्शन आपको यहाँ लिखा होगा. ठीक है, डॉर्सल साइड में क्या होता है, यू विल फाइंड न्यूरल कनाल formed by the union of two neural arc arising from the sides of the centra. In natural position, the spinal cord runs through this neural cord. Okay, and neural spine is a flat longitudinal ridge projecting upwards from the meeting point of the two neural arches. So transverse processes are thick sideward projections. Okay, transverse processes are thick sideward projections from the neural arches. And the neural arches also bear articular facets. ठीक है, facets मतलब क्या होता है, दोनों साइड से, मतलब facets आपको क्या बोलना चाहिए, काइंड ऑफ ग्रूव. ओके, जहां पे दूसरी बोन आकर के जुड़ सकती है. ओके, उस तरह से याद रखो. शो यू व्हाट आर, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है. अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क. ओके, इज देयर एनी टर्म व्हिच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस, आपको सब समझ में आ रहा है? सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, miss. जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये चीज देखोगे ना ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, जैसे कि दिस इज फेसेट फॉर आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल ऑफ रिब. ठीक है, रिब का जो ट्यूबरकल पोर्शन है वो यहाँ पे आकर के जुड़ेगा. तो ये हो गया ये एक फेसेट हो गया, एक मतलब एक काइंड ऑफ स्मॉल फेस ऑफ द बोन जहां पे आके दूसरा पार्ट लगने वाला है. ठीक है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पे ऊपर के लिए कुछ जाएगा. ठीक है, ये दूसरा है. ये देखो, ये एक और फेसेट है, ग्रूव, जो कि हेड ऑफ द रिब को लगेगा. क्योंकि जो हड्डियां होती हैं उनमें अलग अलग पोर्शंस निकले हुए होते हैं, वो निकले हुए होते हैं ये, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, वो अंदर की तरफ धसे होते हैं. क्यों होते हैं? जिस तरफ वो निकले हैं मतलब वो किसी और फेसेट में जाकर के लगेंगे अच्छे से, और उनका जो लोअर पोर्शन होता है वहां भी ग्रूव्स होते हैं, फेसेट्स होते हैं फॉर नेक्स्ट बोन टू फिक्स इनटू इट. ओके, सो उसको हम बोलते हैं फेसेट. इज दिस क्लियर? Is this clear? Here, is it clear to you? Why no one is answering? Hello. Okay. Maybe आप लोगों में से बहुत लोगों का microphone is not working. Okay, no problem. Okay, so those are facets, and in natural position the spinal cord runs through this neural canal. Neural spine is a flat longitudinal ridge projecting upwards from the meeting point of the two neural arches. Then transverse processes are thick sideward projections from the neural arches. तो ये अलग अलग positions हैं जिसको explain किया गया. जैसे ये है गया transverse, ये हो गया neural spine, this is neural arch. Okay, so all these things.
Then transverse processes हो गया. Then neural arches जो होते हैं इनके ऊपर articular facets होते हैं. Okay, articular facets में one in front and one behind on each other, on either side. Okay, they help in joining the bones. Then invertebral disc भी होती है एक जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, gristle. Okay, so that is a cushion between the two vertebrae. Okay, is this clear? I think it will be too much to remember today. So let's stop it here only. Okay, we have discussed till this part. Okay, and then we'll start from here in the next class. Okay, so for today, we'll end it here.